What's up, everyone? Salam, namaste, sasyakal to all of you. Hope you guys are doing absolutely fine, guys. So, guys, thank you so much for your love and support. We are close to 1K family, guys. Imagine Hey. we started this journey 5 months ago, and now we are close to 1K. Thank you for so much of love and support. Please do continue the same. And so, guys, आज का टॉपिक है आज का टॉपिक है आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक गाइस आई लव इट एंड डेफिनेटली ही इज गोना लव इट एज वेल. हम आपके जो क्वेश्चंस होते हैं, जो आपकी क्वेरीज होती है, जो आपके कंसर्न होते हैं, वो आज हम यहाँ पे क्लियर आउट करेंगे. जहाँ से आपने जितने क्वालिफिकेशंस के बारे में पूछा है, स्किन टोन्स के बारे में पूछा है, एज के बारे में पूछा है, सारी चीज ये जनाब क्लियर करेंगे. अकेला नहीं, हम दोनों हम दोनों मिलके करेंगे. यस गाइस, काफ़ी लोगों ने हमें कमेंट्स में भी सवाल किए और इंस्टा पे भी डीएम किए. Yes. सो हम आज उनका जवाब देंगे. प्लीज़ अगर आपकी भी कोई क्वेरीज है तो प्लीज़ कंटिन्यू आस्किंग द सेम. एंड सो लेट्स बिगिन. Hey guys, welcome back. So, the very first query or the question is gonna come soon. So, किसका है first query? So guys, the first question is from Nikita Pukale. Hi, So hi Nikita. So she asks, how can we apply for this job? So बताएंगे कैसे? गाइज हर एयरलाइन की उनकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट होती है. अगर आप गूगल पे जाओगे, जैसे आप स्पाइस जेट लिखते हो या विस्तारा लिखते हो, जेट एयरवेज लिखते हो, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट आती है. आप उस पे जाओ. हर ऑफिशियल वेबसाइट पे नीचे करियर का ऑप्शन होता है. उसमें ग्राउंड स्टाफ से लेके, क्रू से लेके, इंजीनियरिंग, पायलट्स, सभी की ओपनिंग्स होती है. जो भी डिपार्टमेंट एक एयरलाइन की ज़रूरत में है, वो सारी चीज़ों की वहाँ से होती है. एंड वेयरएज जब वॉक इन्स आते हैं तो न्यूज़पेपर्स में आ जाते हैं एड्स. इवन नाउअडेज टीवीज़ पे भी एड्स आ जाते हैं. सो जस्ट ब्राउज एवरीथिंग, यू विल गेट टू नो. एंड गैस काफ़ी शहरों में लाइक बॉम्बे, दिल्ली और कोलकाता, वहाँ पे कंसल्टेंसी एजेंसी होती है जहाँ आप अपने आप को एनरोल करा सकते हैं और वो आपको बताएंगे कि आप कहाँ पे इंटरव्यू है एंड आप जाके दे सकते हो. राइट? यस, एंड द बेस्ट पार्ट इज दे डोंट चार्ज यू, बिकॉज charge you. अगर एयरलाइन आपको रिक्रूट करती है तो उनको एयरलाइन से उनसे वो पैसा प्रॉफिट मिलता होता है. है, हमसे वो चार्ज नहीं Yeah. करते हैं. सो दीज आर द जेन्युइन वंस. सो बी केयरफुल बिफोर यू reach out for any consultants, right? And if somebody is asking for money, please do a research like if they are genuine or not. Yeah. Because some agency they do charge the money, but make sure you do your proper research. Ask some of the people who are already enrolled there or who already got the job from there. Yeah, Yes. good. So the next question is Yeah. from Himanshu Barua, Hi. and his question is, what qualification needed for cabin crew job? So guys, basically we already made what are the basic requirements for Yes. cabin crew. I'll put a link here. And रही बात what are the basic qualification? It's just a 12th 12th pass. pass. In India में हम कहते हैं 10+2 qualification. मेट्रिक भी कहते हैं कहीं कहीं पे. Metric 10 तो बोलते हैं, so 10 अच्छा, plus sorry. 2. Like 10+2. high secondary school बोलते हैं उसे. Okay. So just very easy basic, right? मुंबई का HSC. कोलकाता में हम बोलते हैं क्या कहते हैं? हायर सेकेंडरी. हाय, ओके, फॉर अस वी कॉल इट HSC. हाँ, 10+2 is 10+2. सो इट्स वेरी बेसिक गाइस. जस्ट पर आपको पास होना. एंड काफी क्वेरीज ये भी आ रही थी कि परसेंटेज कितना होता है. सी देयर इज नॉट Doesn't गिवन matter. परसेंटेज. as long as you pass. That's it. यस. अब वो एक अटेम्प्ट में हो जाओ या 3 अटेम्प्ट में हो जाओ, बट प्लीज पास हो जाओ. जाओ. प्लीज. और गैस काफ़ी लोगों ने ये भी पूछा कि इज इट साइंस रिक्वायर, मैथ्स रिक्वायर्ड? डजंट मैटर. साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स कुछ भी. आई एम आर्ट स्टूडेंट. Yeah. एंड यू आर? And I'm arts as well. तभी क्या है? Yeah, आर्ट्स. आई रियली थॉट यू आर कॉमर्स डूड. no. Very weak in maths. So guys, yeah, you just need to be passed. That's it. 2 3 4 अटेम्प्ट कुछ भी हो, पास हो जाओ. और इसी के साथ इन्होंने एक और क्वेश्चन का आंसर दे दिया है. क्या मैथ्स कंपलसरी है? मैथ्स अच्छा होना चाहिए? नहीं. सो यू गॉट द आंसर. मेरा मैथ सबसे आई थिंक दुनिया में जो सबसे वर्स्ट जिसका होगा मैथ्स, उससे कंपेयर कर सकते हो आप. No, he's lying. He's very brilliant in maths. Uh, So the next one, come on. Okay, so the next question is,
we already answered from the first question, which was Bhag. Yes, how to apply. So भाग्यश्री, आपके लिए भी वो सेम ही आंसर है कैसे अप्लाई करते हैं. जस्ट रेफर टू इट, जस्ट जाइए वेबसाइट्स पे एंड यू कैन डू द रिसर्च ओवर देयर. तो आपको किसी का वेट करने की जरूरत नहीं. You yourself can update yourself. Yeah. You yourself can update yourself. So the next question is from Interesting Guys. Hi. Okay, Interesting Guy. Just let us know what's your name. Hi, interesting. So his question is, sir, what was your age when you cleared the interview? So my age, बता दो. So it was 21, guys, when I cleared my interview. Although it was from second attempt, first attempt I got rejected in Jet Airways interview. Second, it was with SpiceJet and I got selected. That time I was 21 years old, right? What about yours? I was not 21. क्या था? I'm sorry, I was not 21. मैं अपने वीडियो में बताऊंगी. Okay. So let's see the next question. What's the next one? Next is from Akhil Khan. Okay, such informative and motivational videos, bro. Thank you, Akhil, for the comment. That's so sweet. Can you please make a video related to alternative career option for cabin crew? Okay, guys, from my side, I would say as an alternative career options for cabin crew. Now, it depends upon you. आपको किस में interest है? Because as in, if I have to say, मेरा alternate option after cabin crew job would be something different to him. It would be completely different. It depends upon where you want to go and what have you decided or which background of studies you come from. So it's totally up to you. Whereas once a cabin crew and after that, there are a lot of opportunities. Any marketing industry will be ready for you. Any event management industry will be ready for you because we are like a spark, you know. आप खड़ा कर दो and we know हम किसी से कहीं भी यूँ बातें शुरू कर सकते. We won't hesitate कि यार ये nationality है, इससे बात करें, इसका culture क्या है. We just blend with everything which goes on. So it's up to you. How would you say about it? Okay, according to me, you can apply in hotelier industry, like in the service industry, as a guest manager, front office, anything, guys. With the cabin crew experience, you have experience to deal with the customers. Like और क्या चाहिए आजकल companies को experience चाहिए जो कि आपके पास है. So you can apply in hotels, restaurants. I mean, so much. You can start your own business. Why not? Entrepreneur. Yeah. Wow. So Yes. Akhil, thanks for your comment. Let's go to the other one. From Hitesh Mahanti. Sir, can you tell me which international airline hire cabin crew from India? A Guys, lot. Okay, most of them. Yes, I think to start 90%. with entire जैसे कि Emirates they wait for you, Etihad they wait for you, Gulf Air they wait for you, Air Arabia, like पूरी जो Middle East की airlines है, they all recruit Indians a And lot. not only Middle East guys, British even Airways. British Airways, Swiss Airline. I mean, American Airlines, I so have a friend many, working there. So you can apply anywhere. Indians की बहुत डिमांड है, हम बहुत मेहनती होते हैं, तो अप्लाई करो. So Hitesh, here we go. That's your answer. The next from Rajat Curry. What's the maximum height required for male I know. cabin crew? You know? Yeah, What is it? 6.4. How you know? I googled it. देखा आपके क्वेश्चंस के लिए मैं गूगल करती हूँ. 6.4 is the max height क्योंकि एयरक्राफ्ट भी छोटा पड़ जाएगा ना. भी छोटा है, guys. पता चला चलोगे धाड़ लग रहा है. And just to let you know, my height is 6'3", so बच गया मैं 1 इंच से. फिर मैं कैसे मिलती? So yeah, guys. So the minimum requirement we already mentioned in our previous videos. It is 5.5 for guys, right? Yes, for guys. So the next question from Piyush Sharma. I have to say Piyush, this is very interesting one. मैं इनसे जवाब चाहती हूँ इस चीज़ का. So thank you Piyush. Okay, his question is, भैया लड़के इस इंडस्ट्री में कम जाने का शौक रखते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि लड़कियां ज़्यादा लेते हैं ये एयरलाइंस वाले, ऐसा क्यों? So guys, Piyush, basically airlines की जब बात करें हम cabin crew की, so cabin crew is like a brand ambassador of that airline, like the face. So अगर आप as a passenger आप ही travel करते हो तो आपको लड़के ज़्यादा पसंद आएंगे देखने में cabin में या लड़कियाँ? Of course लड़कियाँ, right? So that's what I understood, right? And most of the airlines they hire like 70% girls and 10 to 20% or 30% guys. Even though some of the airlines they don't even hire guys, like Indigo is one of Indigo those. is one of those in domestic. Yes. But most of them they hire guys and that's how it is. and क्या करें यार? ऐसा तो see everyone knows airline industry is a glamour industry, right? So glamour कहाँ से ज़्यादा आता है?
लड़कियों से। That's simple. But ऐसा नहीं है कि वो लड़के नहीं लेते, वो लड़के भी लेते हैं, and आजकल काफ़ी लड़के भी आ रहे हैं. So I would say nowadays, if I have to say the ratio, it's 50-50. If we only look into Indian industry, yeah, there we have a lot of girls, but after international exposure, what you will say? It's 50-50. It's 50-50. Yes, a lot. So go for it. It's nice. Yeah. Let's see the next one. Wow, you have a lot of questions this time. Yeah. Okay, guys. So these are the questions which we got in the On the comments. comment section in YouTube. We'll take some questions from the Instagram as well. So guys, this will be my favorite part. मैंने आपके questions यहाँ पे लिखे हैं और मैं इन जनाब से पूछने वाली हूँ. So But before we start from the Instagram questions, guys, I have one interesting from YouTube Pickle. I don't know your name. Hi, YouTube Pickle. hi Pickle. So he said, "Future flying beast." Oh my God, Honestly, guys, thanks for your so much respect, but that guy is in different level. He is like, we admire him so much. we right? really admire him and we really follow him. It's very nice. Yeah. And अगर आपकी दुआ और support रही, so इंशाल्लाह उन तक तो नहीं, but कहीं ना कहीं पहुँच जाएंगे. So keep supporting. Yeah. Like imagine the guy. He's cleared his IIT. He worked as a pilot. He had 3 YouTube channels. So such a hardworking guy, right? True. And cute family. Cute family as well. Raspberry. Raspberry. She's such a sweet child. She's cute. Okay, guys. So let's go for the next Instagram questions. DM. Yay! So Mr. Flying Witch, are you ready? Yes. Let's see. Okay. What is? Is it compulsory to have domestic experience to be an international cabin crew? Oh, that's an interesting question. So, guys, it's not compulsory. You can join international airline without any domestic experience as well. बहुत सारे लोग क्रू के साथ मैंने फ्लाई किया जो डोमेस्टिक में बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, फर्स्ट टाइम एविएशन में जॉब, और वो दे मेड इट टू द इंटरव्यू. सो I mean if you have that, what it needs to be cabin crew, just go for it, but make sure that you fulfill the above requirements which they need, like 21 years and above, the qualification, the English fluency, and all most of that, right? And we have a video which we have made. So best thing हम उनको link वापस से दे देंगे, so you guys can check out about it. So I hope this question is answered. Now we'll go for the next one. Okay. Does skin tone matters, like as if one is fair, one is dark, one is whitish? So is it skin tone matters? ऐसा कुछ है ratio कि वो fair को ज़्यादा लेंगे? What do you say? Or what is your answer to it? Guys, ऐसा कुछ भी मैटर नहीं करता, आपकी कोई भी स्किन टोन हो, इट डजंट मैटर एट ऑल, बिकॉज एयरलाइंस दे जस्ट नीड द पर्सनैलिटी हु कैन इंटरेक्ट विद द कस्टमर, हु कैन बी कॉन्फिडेंट व्हेन द सिचुएशन नीड्स लाइक सेफ्टी, फर्स्ट एड. सी गाइस, इंडिया में हम ज़्यादा स्किन टोन्स ये सब को तवज्जो देते हैं, लाइक फेयर एंड लवली क्रीम एंड ऑल. इसकी मतलब अब जब इंटरनेशनल फ्राई करते हो तब आपकी इसकी वैल्यू पता चलती है कि दे डोंट डिस्क्रिमिनेट. They don't even sell this kind of cream, fair and lovely, fair and handsome. It doesn't matter. Everybody belongs, they have their own beauty. So, especially in the airline industry, they don't care at all, right? What do you think? I totally agree with him. Like in the culture we are and in which where we are living currently, यहाँ पे ऐसा कोई discrimination नहीं होता. We don't get jobs on basis of our color. We get the jobs on basis on how well we are qualified and how much we can prove ourselves. So ये एक यहाँ पे है. So guys, if you're even in India, I would say even in India they don't discriminate. हम जब ने SpiceJet में काम किया था, we had like with due respect, जैसे कहते हैं सारी स्किन टोन की लड़कियां थी, सारे स्किन टोन के लड़के थे, बट द ओनली थिंग सबकी स्किन क्लियर थी. बस ये एक चीज़ है. अगर आपको कोई कह रहा है कि यार जैसे कि मेरे साथ था, एंड आई थिंक मैंने आपको अपनी स्टोरी बताई थी, लाइक ओके फाइन, माय स्किन कलर इज ओके दिस, बट आई हैड अ लॉट ऑफ एक्नेज एंड ऑल. सो दैट केस acne एक problem होती है. Yeah, make sure guys your grooming is up to date, like your skin is clear, not many pimples, because come on, you are a face of the airline, so कोई भी airline चाहेगी कि उनका क्रू अच्छा दिखे, right? Yeah, and like कोई अच्छा पर्सन आके आपको सर्व करे, like okay, if you go for a Taj and Oberoi, considering अगर कोई एकदम से आता है आपके पास and face पे किसी वजह से breakouts and all, you will be also like यार मैं ताज में आया हूँ और ये क्या है. With due respect to that person, होते हैं medical reasons होती हैं, but at the other hand you have another person approaching with clear skin which will make you more comfortable. You yourself knows the answer. Whereas there is no discrimination on basis of your color or your skin tone. Anybody can apply as long as you
fit that criteria. Yes. So guys, here were the few of the queries जो हमारे comments में आए थे, जो उनके DMs में आए थे, and we have answered. I hope it's clear for you. Whereas again, it's an open house, and do let us know if any more queries. And guys, he is very close to 1K, and definitely when we cross 1K, we'll be coming live. Yeah, let's. When we are together, we'll be coming live and we will answer all your questions over there. So from my side, take care, and he will continue. So guys, thank you for your questions and all. Please continue the same. If you have any more questions, please ask in the comment section. And there is another YouTube channel, like we have another YouTube channel, Crazy Z. I will put the link again in the description. Please follow her. Some more details regarding this job profile and some beauty tips for ladies. Yeah, do check her out. And profile. for guys as well. So thank you so much, guys. Please continue showing the love, and we'll see you in the next vlog. Till then, Till then, masalama. salama.